I don't think that we need any special program for livelihood. These people have been doing agriculture, practicing agriculture for centuries together. Their livelihood is basically dependent upon they work as porters with the army, and then the walnut tree. Approximately a tree gives about 8 to 10,000 rupees. So that is mostly the livelihood. I don't think government should come up with any scheme of rehabilitation. Restoration of irrigation facilities, along with building infrastructural facilities of roads, schools, healthcare centres, are all dependent on the funds released by the centre. Moving further from Bela camp, we travelled another couple of hours on broken roads to reach Sarai, the last motorable point in Udi's Halka Shahadra zone. From Bela camp we reached Sarai, the last motorable point, in about 2 hours. And now we're trekking this road up to the Chappar camp, which is about 2 kilometers from Sarai. And as you can see, the trek is quite tough. When actually the earthquake happened, this entire thing was in a chaos. And the army was a major factor to remove all the rubble and clear the way to get relief to the victims. Going by the intensity of the earthquake, which was 7.6, which was very high, and seeing the houses collapsing like a pack of cards, we knew casualty rate could be much higher. So rescue mission had to be intensified immediately. We had to present number of rescue teams into all areas, say combining it 2 to 3 villages for one team. And immediately Air Force was requisitioned. They carried out number of sorties and evacuated all the civilian and military casualties on war footing. After a trek of about an hour and a half, we reached Chappar, Sakina's village. "30-year-old Sakina's eyes reflect the trauma that haunts her till date, that made her life come to a standstill. A mother of 4, she lost her husband and the sole breadwinner of the family in a landslide due to the quake. His body still lies in the rubble somewhere. Sakina still lives on the hope of him coming back one day. A patient of asthma, her failing health both physically and mentally gives away a bleak future she and her children have without proper counselling and medical aid. मकान भी बनाया था ना, वो भी जिससे टूट गया, खामन भी ज़लज़ले से मार गया। बस फिर मुझे उसने बोला, सास ने, जे यहाँ से अभी जाओ, माँ बाप के जाओ। और गांव वाले भी बोले, सरपंच को भी पता है, उसने बोला जब ये तंग करते जाओ। फिर मैं अपने भाई बोलने लगे, उधर नहीं कैसे अभी ले जाएंगे ये बच्चे। और सब बोला, सरपंच ने भी इनके बाप ने यहाँ से खेती भी मूल का ली थी, यहीं बैठो। उसको भी डॉक्टर को तरस आ गया, उसकी मम्मी है अब्दुल रशीद की, वो पानी मत आन सकते। अभी फिर उसको खाना भी पका कर देती हैं, लकड़ी भी आन कर देती है, वो आगे से दलांजा बोलते हैं उसको। सब काम फिर करते हैं, फिर भी इन लोगों को नहीं लगता है, इनको कख नहीं। ये बोलते हैं जब आज कौन पूछता है। अगर खावन भी था, फिर खावन के साथ बहुत कदर थी, वो अच्छा आदमी था। फिर उनके बच्चों को मत सटे, दवाई भी नहीं है, मकान की जगह भी नहीं है। इधर से दर्द होता है, इधर सिर में दर्द होता है। अगर खावन था वो ले जाए था सब, बारामूला में भी, श्रीनगर में भी। और जब पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आकर गाड़ी में भी अगर जाएंगे वो भी बोलेगा किराया दे दो। No doubt they are under the trauma, stress. But I don't think it is possible for the government to have the counseling, because it is a massive work and you need dedicated psychiatrists to do it. But some of the NGOs are trying that. And we'll be lucky enough if everybody is covered who is under stress. Besides medical facilities and trauma counselling, the need of the hour is the dignity of a future with a livelihood. The original irrigation systems were completely destroyed. Yet, with the Jhelum being just a kilometre away and enough land to cultivate with proper irrigation facilities, the people of Udi
could still stand on their feet. The need of the hour is also to build up Pakka seismic-proof structures. On our trek back to Sarai, I was pleasantly surprised by these two enterprising brothers who have managed to scramble back their tailoring shop, which was completely destroyed by the quake. 8 अक्टूबर के ज़लज़ले ने हमारे घर भी बर्बाद कर दिए और ये हमारी दुकान भी गिर गई। फिर हमने अपना टीन कुछ मकानों का खाड़ा कोई बाहर कुछ एनजीओ ने दिया तो हमने यहाँ पर ये नया शेल्टर बनाया। तो उसके बाद हमने कुछ बारामूला से पहले भी हम आधार लेते थे, उनके साथ जान पहचान नहीं थी तो फिर उन्होंने और हमें सामान दिया तो हम आगे का रुज़गार चला रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमें एनजीओ की तरफ से भी किसी भी तरफ से भी हमारे पक्के मकान और नया शेड यहाँ पर दुकान वगैरह होनी चाहिए जिससे हम अपना काम चला सकें। उसके बाद दूसरी कमज़ोरी ये है कि यहाँ पर पानी नहीं है। हमारी खेती बाड़ी जो है वो टोटल ख़त्म है। उसका सीज़न मार्च अप्रैल में होता है, वो निकल गया। यहाँ से झेलम हमारे तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम होगा। अगर कोशिश की जाए वहाँ से पानी हमारी ये खेती बाड़ी में आ सकता है और अगर हम ये आप कुछ करेंगे तो ये पानी बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, हमारी खेती बाड़ी भी आगे कामयाब हो सकती है। गर्मी भी यहाँ पर इतनी गर्मी जो आज पड़ रही है ये तो हमने कभी देखी नहीं है। Having managed to come this far, these brothers still need help to build further in this seismic zone. Uri is far from being normal now or in the near future. But without aggressive and ongoing rehabilitation efforts, the victims here may have no future at all. I leave Uri with a hope in my heart and a prayer on my lips.